This morning is our history test. This is a humorous poem by Ken Nesbitt, and you can see in the picture the children are sitting here and doing their test. Words to know: mayonnaise, a thick creamy dressing for food made from egg and yolk. एक मोटी तह वाली क्रीमी ड्रेसिंग जो कि एग यॉक से बनी हुई होती है, वो फूड की ड्रेसिंग के लिए यूज़ होती है. Tennessee, a state. This is a state in America. Timbuktu, a city in Mali. First, we will know the Urdu words meaning, and after that, we will move towards the reading a translation of the poem. So, the first word is history. History is a subject. History, तारीख, मजमून. पिंड mean जोड़ना या लगाना. इंक्लूडिंग शामिल करना, शुमार करना, दाखिल करना. कोट्स, अकवाल. स्टोर्ड तरतीब से रखना, तह बते रखना. स्क्रिबल्ड बदखस या शिकस्ता तहरीर पर लिखा हुआ या बुरे तरीके से लिखा हुआ. विनर्स जीतने वाला, फतेहयाब, फातेह. ओलंपिक ये गेम्स हैं. ओलंपिक. टेनेसी अमेरिका की एक स्टेट. टिम्बुक्टू माली का शहर. रोम इटली का दारुल हुकूमत है. ग्रीस यूनान. शेक्सपियर एक बहुत बड़े शायर थे, ड्रामा निगार थे या फिर नावल निगार भी थे. प्ले खेल या नाटक. इन्वेंटेड इजाद की. वेल प्रिपेयर्ड बेहतरीन तैयारी के साथ या बेहतरीन तैयारी के साथ. नर्वस घबराना, बेचैन. स्केर्ड डरना, खौफजदा हो जाना. लेफ्ट छोड़ा. ग्लासेस चश्मा. एनेक ह्यूमरस मजाहिया. फेमस मशहूर. वेस्ट बनियान. रोट लिखी. स्लीव्स आस्तीने या बाजू. सीक्रेट कोड खुफिया लोग या इसको हम चोर लिखाई भी कहते हैं. Now let's move towards the translation of the poem. This morning is our history test. आज की सुबह हमारा हिस्ट्री का टेस्ट है. I have pinned my notes inside my vest. मैंने अपनी वेस्ट के अंदर वाली साइड पे अपने नोट्स जो कि मैंने लिखे हैं वो पिन कर दिए, जोड़ दिए. इनसाइड माई कोट, अपनी कोट के अंदर. आई रोट माई नोट्स, और मैंने अपने नोट्स कोट के अंदर लिख दिए. इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स, अहम की और फिर मशहूर कोट्स भी लिख दिए, उनको शामिल करते हुए वो सब चीज़ें भी. आई हैव रिटन मोर अपॉन माई हैंड, और मज़ीद मैंने अपने हाथों पर भी लिखा. दैट ओनली आई कैन अंडरस्टैंड, जो कि सिर्फ मैं ही समझ सकता था. एंड इन माई सॉक्स एंड स्लीव्स आई स्टोर्ड, और फिर ये तमाम नोट्स जो मैंने लिखे अपनी बाजुओं में, स्लीव्स में और अपनी जुराबों में तह बते या तरतीब से रख दिए. स्टोर्ड मीन तरतीब से रखना. माई स्क्रिबल्ड नोट्स इन सीक्रेट कोड्स, मैंने अपने स्क्रिबल्ड या फिर बुरे तरीके से बदखती से लिखे हुए जो कि सिर्फ मैं ही समझ सकता था वो नोट्स, अब जो और खुफिया तरीके से खुफिया अल्फाज में लिखे हुए नोट्स मैंने तय करके अच्छी तरह से तरतीब से अपनी सॉक्स और स्लीव्स में रख दिए. आई हैव रिटन डाउन सो मैनी नेम्स, मैंने कई नेम भी लिख डाले. ऑफ विनर्स ऑफ ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में, ओलंपिक खेलों में जीतने वालों के नाम. ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों के नाम. पीपल, लोगों के नाम. प्लेसेस टू, और जगहों के नाम भी मैंने लिख डाले. फ्रॉम टेनेसी टू टिम्बुक्टू, टेनेसी से लेकर टिम्बुक्टू तक जितने भी ये बिल्डिंग्स, पीपल, लोग, जगह या फिर लोग, सब थे, इन सब के मैंने नाम लिख डाले. आई इवन कॉपीड डाउन अ पीस, और मैंने हत्ता के ये भी लिख डाला. एन एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीस, और हत्ता के मैंने और इटली के लोगों के, जगहों के, इमारतों के नाम भी मैंने लिख डाले. प्लस एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, और मज़ीद ये कि शेक्सपियर के ड्रामों से भी, शेक्सपियर के प्ले से भी हर चीज़ मैंने नोट कर डाली. टू हु इन्वेंटेड मायोनीज़, और ये भी लिख दिया कि आता कि ये भी लिख डाला कि मायोनीज़ किसने ईजाद की या फिर किसने इन्वेंट की. आई केम टू स्कूल सो वेल प्रिपेयर्ड, सो मैं मुकम्मल तैयारी के साथ स्कूल आया, पहुंचा. आई वाजन नर्वस, वाजन स्केयर, मैं ना नर्वस था, ना परेशान था, ना खौफजदा था, डरा हुआ था, कुछ भी नहीं था. बट हेयर इट इज़ द हिस्ट्री टेस्ट, लेकिन
फिर भी ये एक हिस्ट्री का टेस्ट था, तारीख का टेस्ट था। आई लुक इनसाइड माई कोट एंड वेस्ट। मैंने अपने कोट और वेस्ट के अंदर देखा। किस लिए देखा? कि मैंने जो डेट्स और कोट्स लिखे हुए थे उनको देख सकूं। टू गेट द डेट्स एंड फेमस कोट्स, कि अपनी मशहूर कोट और डेट्स जो मैंने लिखी थी उनको देख सकूं, मतलब चीटिंग कर सकूं। एंड आई फाउंड आई कैन नॉट रीड माई नोट्स, लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने नोट्स पढ़ नहीं पा रहा। सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीस एंड रोम। सो मच फॉर शेक्सपियर, ग्रीस एंड रोम, जो कि बहुत ज़्यादा शेक्सपियर, रोम और यूनान के बारे में थे। आई लेफ्ट माई ग्लासेस बैक एट होम, क्योंकि मैं अपनी ग्लासेस, अपने चश्मे अपने घर पे पीछे भूल आया था। So it's a very humorous and funny poem by Ken Nesbitt. Nesbitt writes humorous poems for children. Ken Nesbitt ने बच्चों के लिए बहुत सारी मज़ाहिया नज़में लिखी हैं. Like this poem, he is an American and he was born in 1962. वो एक अमेरिकन पोइट हैं और वो 1962 में पैदा हुए. This morning is our history test. Exercises understanding the poem. Answer the following question. Number A. Which item of clothing did the child write notes on? Here the child mentioned about many such as vest, coat, sleeves, socks, but on which cloth did he write? On which cloth did he write the notes? So there is only coat, inside the coat. So the answer is the clothing item that the child used to write notes are inner side of coat or jacket, and he pinned notes inside the vest, socks and sleeves. So these are the item of clothes, but he pinned the notes inside these, but only he wrote the notes on the coat, inner side of the coat. Number B. Find two phrases to show that the child has written the notes in such a way that others will not be able to read them. ऐसी कौन सी दो फ्रेजेस यूज हुई हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि बच्चे ने जो नोट्स लिखे हैं उनको सिर्फ वो ऐसे नोट्स हैं, ऐसी राइटिंग में उसने लिखे हैं कि वो सिर्फ बच्चा ही समझ सकता है. These two phrases are in secret code only I can understand, and we also can say my scribbled notes. In secret code, scribbled notes, and only I can understand. Number C. What emotions does the child usually feel before a test? अमूमन बच्चे के टेस्ट से पहले किस किस्म के इमोशंस होते हैं? The child usually feels nervous and scared before a test. टेस्ट से पहले अमूमन बच्चे सहमे हुए, डरे हुए या फिर नर्वस होते हैं. नंबर डी. Why can't the child read the notes? बच्चा नोट्स क्यों नहीं पढ़ सकता था? The child can't read notes because he or she left glasses back at home. वो इसलिए नहीं पढ़ सकता था कि वो अपनी ग्लासेस पीछे घर पे छोड़ आया था. Number D. Is it good idea to cheat in exams? What should one do instead of cheating? क्या ये अच्छा ख्याल है कि एग्जाम्स में, पेपर्स में, इम्तिहानात में चीटिंग की जाए? This is not a good idea to cheat in exam. Instead of cheating, one should prepare himself or herself well for exams, because only the hard work is key of success. These questions are more difficult. Discuss them first. Number F is, this poem uses exaggeration to create humor. Which things that the child says he has done are unlikely to be true in your opinion? इस पोएम में एग्जैजरेशन मीन बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, बहुत ज़्यादा वो बात जो कि रियल में ना हो लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, उसको ह्यूमर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द एग्जैजरेशन, दैट व्हाट इज एग्जैजरेशन, एंड देन आफ्टर वी विल आंसर द क्वेश्चन. सो द एग्जैजरेशन इज द एक्ट ऑफ हीपिंग एंड पाइलिंग अप. हीपिंग एंड पाइलिंग अप, पाइलिंग का मतलब है ढेर लगाना, किसी चीज को डालते जाना, ऊपर डालते जाना और कोई किसी चीज का ढेर भर जाना. यहाँ पर भी एग्जैजरेशन का मतलब है बात को बढ़ा चढ़ाकर आगे, बहुत आगे आगे बयान करना, बढ़ा चढ़ाकर बयान करना कि जो रियल में बात ना हो लेकिन उसको ज्यादा बताना. सो इट इज एक्ट ऑफ heaping and piling. This is an exaggeration. The other words that we use instead of exaggeration, overstatement. हम overstatement कर रहे होते हैं, या the
And the second name for exaggeration is hyperbole. The act of doing or representing in an exaggerative mean excessive manner. So the answer is, this is impossible to write down all the details or unlikely things, name of winners in Olympics, places, people, inventors, and even everything about Shakespeare's play in notes. So all these unlikely things, these are only exaggerations. And we also can write answer of this question like this. The child says he wrote the names of all the winners of Olympic Games, buildings, people, places, even ancient Rome and ancient Greece. And also he wrote everything about Shakespeare's plays and inventor of mayonnaise. All these are unlikely to be true. In my opinion, it's impossible to write all these unlikely things. So if you want to write the answer of this question in short, you can make this answer short. Number G, if the child had written all these notes, would he or she needs to cheat? अगर बच्चे ने ये सब नोट्स लिखे हैं तो क्या उसे चीटिंग की ज़रूरत थी या नहीं? It takes much hard work and effort to write all things that mentioned in the poem. So it is better to study or focus on relative topic or content which needed for history test, and he or she doesn't need to cheat. For this is exaggeration, one cannot write so many things. Number H, is there a moral to this poem? क्या इस पोएम के लिए कोई मॉरल या कोई अखलाकी सबक इसके एंड में हमारे लिए है? चीटिंग नेवर मेक्स अ मैन सक्सेसफुल. किसी भी शख्स को चीटिंग एक कामयाब इंसान नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाती. And the second moral that we get from this lesson, and it is, hard work is the key of success, or we can say hard work is the secret of success. Same like this, cheating is the easy way of failure, easy way of unsuccessfulness. About the poetry, look at the rhyme scheme of the poem. Which lines rhyme? So if we study the poem, we can see the rhyming word and the line that rhymes. These are history test, my west. So test and west, these are the same. So this is A. Notes, rhyme scheme is A. Notes, quotes, it's not matched with the first one, so it's B. Hand, stand, it's number C. Stored, code, number D. So in next stanza, names and games. So there is no rhyming word from all this stanza. So this is number E. To Timbuktu. So this is number F. Peace, Greece. Number G. Plays, mayonnaise. H. Prepared, scared. This is different. So this is number I. This is I. Test, west, it matched with the first one, so this is A again repeat here. Quotes, notes again repeat here. Number B, and Rome and home, this is not repeats, and this is not matched with other rhyming words, so this is I, and after I there will be J. So the rhyming scheme is A, B, C, D. In second stanza, E, F, G, H. And in the next stanza, I, A, B, J. Number B, copy the rhyming pairs into your notebook. So you have to copy the rhyming pairs such as test, west, notes, quotes, Rome, home in your notebook. Number C, a syllable is a single sound. The word test has one syllable. The word history has three syllables. HIS, his, TO2, RY, history. Can you count the syllables in each line of the poem? So in first stanza, let's count with me. This morning is our history test. There are 9 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have
in my notes inside my vest. These are 8 syllables. Inside my coat I wrote my notes. These are 8 syllables. 8 syllables. Including dates and famous quotes. I have written more upon my hand. 8 syllables. That only I can understand. 8 syllables. And in my socks and sleeves I stored. 8 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. My scribbled notes in secret code. 8 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So in first stanza, all these lines have 8 syllables, but only the first line has 9 syllables. I have written down so many names. 8 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Of winners of Olympic Games. 8 syllables. Of buildings, people, places. 2. 8 syllables. From Tennessee to Timbuktu. I even copied down a piece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ancient Rome and ancient Greece. 8 syllables. Plus everything from Shakespeare's play. 8 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To who invented mayonnaise. 8 syllables. So in second stanza, all the lines have 8 syllables. I came to school so well prepared. These are 8 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I wasn't nervous, wasn't scared. 8 syllables. Scared has 1 syllable in it. Wasn't is used as a 1 syllable, but here we will use it, and most of the people used it as 2 syllables. But here it is the history test, so 9 syllables. But here it is the history test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are 9 syllables. I look inside my coat and vest. These are 8 syllables. To get the dates and famous quotes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 syllables. And find I cannot read my notes. 8 syllables. So much for Shakespeare, Greece and Rome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 syllables. I left my glasses back at home. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 syllables. This line have 9 syllables. Number D. Which two lines have 1 extra syllable? Which phrases do they both contain? So if you see, in first stanza, the first line has 1 extra syllable, and in the third stanza, the third line have 1 extra syllable. And which phrase both these contain? This morning is our history test. And in the third line, on the third stanza, history test. The phrase is history test. So we will write answer. Both these lines that have extra syllable, that have 1 extra syllable, it contain the phrase history test. Answer the following questions with reference to the context. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. List 5 topics that the notes were about.
So if you see at the last page, you have to write the 5 topics that he make the list of this. The winner of Olympic Games: 1, the building's name; 2, people name; 3, places name; 4, and then you also can write the everything from Shakespeare plays; 5, and the invented of mayonnaise and others. So there are so many, you can write only 5 names. Which phrase from these lines is repeated elsewhere and where? Phrase: inside my coat I wrote my notes including dates and famous quotes. Famous quotes. So famous quotes is a phrase where it is used, where it is repeated elsewhere in the poem. So it is from first stanza, and if we see the last stanza, the third stanza, in the 5th line, to get the dates and famous quotes. It is repeated in the 5th line of third stanza. This phrase is repeated in 5th line of third stanza. Comparison. Comparison mean मुकाबला करना या किसी को दूसरी चीज एक चीज को दूसरी चीज से मिलाना, तशबीह करना, मुकाबला करना, मुवाजना करना. So when we compare thing in English, we use the word as, or like. Example: as dry as a bone, like a dry bone. Here are some more well-known comparisons: as cool as a cucumber, as dead as a doornail, as cold as a stone, as fierce as tiger, as firm as rock, as changeable as weather. So the question is, match the idioms given above with descriptions given below. Number A, a person who is sure about what he thinks. वो शख्स जो कि बिल्कुल श्योर है कि वो क्या सोच रहा है या फिर अपनी बात पे पक्का है. So we called it as firm as rock. Number B, a person who keeps calm. पुरसुकून बंदा. We called it as he is as cool as a cucumber. A person who acts fearlessly. Say as fierce as a tiger. Number D, something which is definitely not alive. As cold as a stone. A person who shows no feelings or no emotions. As dead as a doornail. A person who changes mood easily. As changeable as the weather. Conjunctions, prepositions and interjections. In exercise C2 on page 20, you read about the sword in the stone. Here is a continuation of the story. So here is the story, and this is page 26, and on page 20 about the story that when they came out to the church, they gazed wonderingly at the sword round the stone. They found these beautifully written letters of gold. You can see the letters of gold that are written on the stone. What are the letters? Who pulls out this sword from this stone will be king of all Britain. कि यानी कि जो भी ये sword यहाँ से निकाल लेगा वो पूरे ब्रिटानिया का, ब्रिटेन का king होगा. All the men tried hard to pull out the sword, but no one could move it at all. सब लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी ना निकाल सका. And in this chapter that we are doing the exercise today, here is the continuation of this story. Here you find out, in this chapter you find out the words and adverbs. Let's continue the story, and this paragraph we will find out conjunctions, prepositions and interjections. No one could pull the sword out. कोई भी sword को नहीं निकाल सका. So the bishop sent men all over the kingdom. तो वहाँ का जो बिशप था उसने तमाम लोग पूरी सल्तनत में, किंगडम में लोगों को भेजा. Listen, they cried. जिन लोगों को उसने भेजा वो कह रहे थे कि सुनो, वो चिल्ला रहे थे. Whoever pulls out the sword will be the king of England. जो भी ये तलवार निकालेगा वो इंग्लैंड का किंग कहलाएगा. Arthur's brother had forgotten his sword. और यही पूरी कोई एक स्टोरी है. इसमें
फिर इसमें एक कैरेक्टर आर्थर होता है, आर्थर का भाई. आर्थर्स ब्रदर हैड फॉरगॉटन हिज स्वॉर्ड एंड आस्क्ड आर्थर टू गो होम एंड गेट द स्वॉर्ड एंड गेट इट. तो आर्थर अपनी स्वॉर्ड घर में भूल गया होता है और वो अपने भाई से कहता है कि जाओ घर और स्वॉर्ड मेरी लेके आओ. द हाउस वाज लॉक, घर लॉक होता है. बट ऑन द वे बैक, लेकिन जब आर्थर अपने भाई को भेजता है तो घर लॉक होता है, वो अपनी स्वॉर्ड नहीं ला सकता. लेकिन जैसे ही वो रास्ते से वापस आ रहा होता है, आर्थर took the sword from the anvil outside the church. वो उस एनवल से, चर्च के बाहर जो एनवल होता है उसमें से वो स्वॉर्ड निकाल लेता है. उसने देखा, वो देखता है कि यहाँ एक स्वॉर्ड पड़ी है. जैसे ही वो उसको खींचता है वो निकाल लेता है. ये वही स्वॉर्ड होती है जिसे सब लोग निकालते हैं लेकिन नहीं निकाल सकते. सो आर्थर वो स्टिक निकाल लेता, वो स्वॉर्ड वहां से आर्थर निकाल लेता है. आर्थर्स ब्रदर saw it, आर्थर का ब्रदर उसे देखता है. Heavens, he cried, वो चिल्लाता है. This is the sword from the stone, ये तो पत्थर बस से वही स्वॉर्ड है, वही तलवार है जो पत्थर में थी. And he took it to his father, और वो उसे अपने अब्बू के पास, फादर के पास ले जाता है. So we have to find the conjunctions, prepositions and interjections from the story, from this passage below. These conjunctions, first of all, we will know. Conjunctions are words that joins a noun, that joins two phrases, two nouns, two sentences, but, or. These are the conjunctions. And so the conjunctions are so. In the third line, and there I wrote C on the conjunctions, but this is conjunction and this is conjunction. And now find out the preposition. What are the preposition? Preposition shows the position of the things. It shows direction, it shows time. So let's know what are the preposition in this passage. Out, preposition. All over, preposition. Out, preposition. Of, to, preposition. On and back are preposition. From, preposition. Outside, preposition. From, preposition. To, preposition. And now let's know about the interjections. Interjections shows our feelings and emotions, and these interjections have exclamation marks at the end. Listen, this is interjection. Heavens, this is interjections. Next question is articles. Articles are A and D. These three are articles. So where we use these things? Copy the following passage into your notebook and add insert articles where necessary. Side actor, the father of K and author, asked K where he got the sword, and K told him, where did you get the sword? Side actor asked Arthur. Arthur said, I got it from a stone. मैंने इसे एक stone से लिया है. Then put it back into an anvil, said side actor, and take it out again. When Arthur put the sword back into the anvil, no one could take it out again. Arthur drew the sword out easily. Side actor knelt before his son and said, now I know that you are the king of the whole of England. So a small group take turns to tell each other about a time when you have had to prepare for a test. Discuss the following. So number A, your feelings about the test, what you did to prepare, what it was like during the test, and how you felt afterwards, and anything you would have done differently. So here I made my speech, my short speech. You can make your own short speech by using these words, by using these sentences. When I prepared my test well, my feelings definitely are good about test.
To prepare my test, I understand the topic and learn it. तो मतलब टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए मैं अपने टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हूँ और उसे लर्न करती हूँ. एंड देन आई रिवाइज इट. फिर मैं उसे रिवाइज करती हूँ इन माई माइंड एंड टेक माई ओन टेस्ट. उसे अपने माइंड में रिवाइज करके खुद से अपना टेस्ट लेती हूँ नोटबुक पे. I feel and then I feel happy and good. Even everyone feels happy and good when he or she was well prepared for test. मैं या फिर कोई भी हो तो वो उस वक्त खुश होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, एक्साइटेड होता है जब उसका टेस्ट अच्छे से तैयार हो. But when I forget something during the test, I feel bad and restlessness. और फिर ये सबके साथ ऐसे होता है, जब कोई अपना टेस्ट के दौरान कोई चीज़ कोई पॉइंट भूल जाए तो वो बुरा महसूस करता है और बेचैनी महसूस करता है. सो आई फेल्ट एक्साइटमेंट एंड आई फेल्ट हैप्पी व्हेन एनीथिंग सच एज अ टफ टेस्ट. मैं एक्साइटमेंट महसूस करती हूँ, खुशी महसूस करती हूँ जब कोई भी चीज़ जैसा कि टेस्ट हो आई वुड हैव डन डिफरेंटली, जबकि मैं उसे डिफरेंट तरीके से करती हूँ या फिर उसे सबसे अलग करके मुख्तलिफ तरीके से मैं करती हूँ तो मैं खुशी महसूस करती हूँ. So I think it happens with everyone. So if you have different story, if you have something different, you can write your own. Composition. Write a response to this letter. We have to write the response of this letter. Let's read. Dear friend, I am writing to ask your advice. मैं तुमसे सलाह लेने के लिए यह खत लिख रही हूँ. I found a small chain with a locket on it in my garden. कि मुझे मेरे गार्डन से एक लॉकेट मिलता है छोटे से, जो कि छोटे चैन में होता है. There is a photograph of young child in the locket. और लॉकेट में एक यंग बॉय, छोटे से बच्चे का फोटोग्राफ है. Who do you think it could belong to? तुम्हें क्या लगता है ये किसका हो सकता है? Who might the child in the photograph be? फोटोग्राफ वाला चाइल्ड बच्चा कौन हो सकता है? How did it get into my garden? और ये मेरे गार्डन में कैसे आ गया? Should I keep it or do something else with it? क्या मुझे ये रखना चाहिए या मुझे इसके साथ कुछ और करना चाहिए? Please write back and let me know what you think I should do. और मुझे वापस ज़रूर लिखना, मुझे इसका जवाब ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, कि तुम क्या सोचती हो मुझे क्या करना चाहिए. बेस्ट विशेस, सैयद. नेक ख्वाहिशात के साथ तुम्हारा दोस्त सैयद. So suppose my friend Sarah wrote me this letter and I am going to answer her of this letter. My dear friend, I receive. You can also write the name of my dear friend Sarah, or you also can write my dear Sarah. I received your letter and I come to know that it might be difficult to find the owner of the chain, but it's not impossible. First of all, you must try to observe the face resemblance of the child with your neighbors, servants, or the guests, relatives who came into your home in last days. सबसे पहले तो तुम जो पिक्चर है तुम्हारे पास, जो फोटो है चैन में, उसमें से ऑब्जर्व करने की, मुशाहिदा करने की कोशिश करो कि वो फेस रिजेम्बलेंस किसी से हो रही है, तुम्हारे नेबर में, सर्वेंट्स में, या सर्वेंट्स के बच्चों में, या कोई भी गेस्ट या रिलेटिव जो तुम्हारे घर आया हो लास्ट डेज में, पिछले दिनों में, तो उनके साथ मैच करती होगी तो तुम इजीली उसको जज कर सकती हो कि ये किससे बिलोंग करता है. इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो सके, यू कैन कॉल और आस्क दीज पीपल. तुम इन्हें कॉल भी कर सकती हो और पूछ भी सकती हो दैट इफ़ दे हैव लॉस्ट एनीथिंग, कि क्या उनकी कोई चीज़ गुम हो गई है. सेकेंडली, यू कैन आस्क योर किड्स. इट माइट बी फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स बिकॉज दे कम एंड प्ले इन योर गार्डन विद योर किड्स. ये तुम्हारे फ्रेंड बच्चों के किसी फ्रेंड का भी हो सकता है क्योंकि वो गार्डन में आते हैं और खेलते हैं. एंड लास्टली, if you don't find any way to reach the owner, hand this chain over to police. इसे पुलिस को दे दो. They will definitely find out easily the owner by the picture inside the chain. वो चैन के अंदर मौजूद पिक्चर से ज़रूर या हर हाल में बहुत आसानी से उसके ऑनर को ढूंढ लेंगे. Thanks. With best wishes or with regards, your faithful friend Zahira.